स्टार्ट है तो किसी नोटिफिकेशन किसी बंद आसीबो स्टार्ट है शेयर कर दो ग्रुप पे हम देखियो तो स्टार्ट कर लाइव चलছে Good morning, dear students. Very good morning to all of you. Hope all are good at home. बाबू सब घर थिबो भले थिबो बहुत दिन पर क्लास होची तो बोर्ड एग्जाम भी तमरो अनिश्चितता भीतर रहिची हबो कि नै ठीक नै डिसाइड भी हे परनी बट हमें मानिक चलेबा हबो काइना गवर्नमेंट ही निजे डिसाइड कर करने जे तमरो क्लास हबो कि नै कारण ताको पाखरे किछ ऑप्शन ही नै कोनोसी पैरामीटर नहीं जोथरे कि समान तुम जज कर परिबे जे क्लास एमसी कोन मार्किंग करे जबो 10th पाई भी बहुत समस्या देखा जाउची ताकर भी मार्किंग कला भी बहुत डिफिकल्ट आसी तमर तो मार्किंग कला आहुरी अधिक डिफिकल्ट आसीबो तो किंतु हम प्रिपरेशन चलेथिबा रिवीजन हम रेगुलर करथिबा देखिबा कोन करथियो हमें पर्टिकुलरली मे बी क्वेश्चन पैटर्न चेंज हे पारे क्वेश्चन पैटर्न चेंज हे कि मे बी एमसीक्यू मोर नंबर आसी पारे सब्जेक्टिव लेस हे पारे पूरी त माने चेष्टा करो टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एमसीक्यूज आ घरे बहुत दिन हला पाठ सहित भी टच छेड़ जीवनी तो तुम माने चेष्टा करो केमती डेली रेगुलर बेसिस रे प्रत्येक चैप्टर रु किछि ना किछि क्वेश्चन सॉल्व करिवो एवरी डे दैट विल मे बी हेल्प यू टू score a good mark as well as for NEET also for JEE also that may be helpful to you. I hope all will come and attend the classes. मु भाबुची हमें रेगुलरली क्लास करिवा रिवीजन इवनिंग रे करिवा 7:30 मे बी 8 हे पारे 1 hour क्लास रहइबो I will try to cover all the topics or all the chapters from physics particularly for the second year students and I will try to record new videos for the upcoming batch also. I will try to manage that one. So let's start. आज पिलाना में इलेक्ट्रोस्टैटिक रो देखिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक रो particularly all the topics or all the chapters from physics. Okay. So let's start. जो मैंने चैनल भी सब्सक्राइब करना निहत रूपे सब्सक्राइब करिवो मो चैट को ऑफ कर देछि तो जो मनकर डाउट रहउची दे कैन आस्क मी ऑन वेयर लेखा डास्क के मध्ये ऊपर पट्टी गेछि कि हम कि तळु को लिखा पड़बो रिवीजन क्लास वीडियो ऑडियो मतलब कि थिबो जदी का प्रॉब्लम अछि मते मैसेज कर परिबो फर्स्ट हम देखिए प्लान इलेक्ट्रोस्टैटिक रो स्टार्ट करिबा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रो कोन अछि हम देखिबा इलेक्ट्रोस्टैटिक रे प्लान फर्स्ट हला तमरो इलेक्ट्रोस्टैटिक रो जोटा कि मैक्सिमम क्वेश्चन आसे एग्जाम रे मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक रो आसे प्राय क्वेश्चन माने पाखा पाखी 20 मार्क्स रो क्वेश्चन यू विल गेट फ्रॉम हियर आ एटा मध्ये बहुत इंपोर्टेंट तमरो एग्जाम पाई मध्ये प्लस तमरो जो एंट्रेंस एग्जाम पाई मध्ये इट इज आल्सो वेरी इंपोर्टेंट कैन एथरे मैक्सिमम क्वेश्चन अछि आ मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग एथरे अछि बहुत उडा प्रॉब्लम अछि
तुमको सॉल्व करिया को पड़िबो तो आमे जस्ट बेसिक जिन छोड़ा कहबा कोन अछि जस्ट के मने पके दोछि कोन थिला थ्योरी पार्टटा तापर आमे क्वेश्चंस करबा तो तमरो फर्स्ट थिंग हला इलेक्ट्रोस्टैटिक रो मीनिंग व्हाट डज इट मींस दैट मींस यू हैव टू स्टडी द चार्ज एट रेस्ट स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट रेस्ट थिला बेला हम चार्ज विषय रे पढिबा जेता चार्ज मोशन करि जाउची हम जो पढिबा सेटा को तमर कहै जाय कोन करंट इलेक्ट्रिसिटी तन जानिथिबो करंट इलेक्ट्रिसिटी माने मोशन चार्ज रो मोशन हेले जोटा आसे ता कहै जाय करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रो फर्स्ट थिंग होची चार्ज कोन जानिया दरकार तो चार्ज कोन तो चार्ज एट रेस्ट से स्टडी को हम कहै जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज एट रेस्ट थिले से स्टडी को हम कहै जाय इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज रो पर्टिकुलरली चार्ज कोन चार्ज एक्चुअली कोन ना जो प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर दैट produces what electric field as well as what magnetic field जोटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे as well as कोन मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करते हैं दैट इज नोन एज व्हाट चार्ज जोटा जे कोन से ऑब्जेक्ट जहां भी अछि तमरो व्हाटएवर इट इज मे बी दैट व्हिच produces electric force as well as magnetic force that you can say as a charge तो चार्ज रो दुई प्रकार रो अछि ओटा ला पॉजिटिव चार्ज आ ओटा ला नेगेटिव चार्ज एटा जस्ट इंट्रोडक्शन मने पके दोछि पॉजिटिव चार्ज कोन नेगेटिव चार्ज कोन तो पॉजिटिव चार्ज जोटा कहले सपोज ओटे बॉडी रे पॉजिटिव चार्ज अछि हाउ यू विल नो दैट दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड व्हिच वन इज नेगेटिवली चार्ज सो पॉजिटिव चार्ज मींस जोथरे देखिबो इलेक्ट्रॉन कोन थिबो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन माने इलेक्ट्रॉन कम थिबो ओटे बॉडी अछि जदि तोर इलेक्ट्रॉन टा बाहर के आसी बा इलेक्ट्रॉन संख्या कम अछि सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट जदि इलेक्ट्रॉन टा बाहर को आसला इफ इलेक्ट्रॉन is coming or you can say just removing outside from that body then that you can say as a positive charge जेंते हमर एग्जांपल कहबो जेंते सपोज मोड एग्जांपल ने हीलियम रे केतरा थाए 2 4 तार एटॉमिक नंबर 2 that means there are two electrons if you are removing one electron dita proton अछि dita electron और dita proton अछि जदि हम गोटे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर नबा if we will remove one electron from helium atom then कोन होबेठी गोटे इलेक्ट्रॉन न जिवो आ दुटा प्रोटॉन न जिवो तो पॉजिटिव संख्या अधिक होला दैट यू कैन सी एज ए पॉजिटिव चार्ज सेमती नेगेटिव चार्ज माने जोठी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थाए if there is excess of electron then that you can say as a negative body or negative charge you can say if excess of electron is there then you can say that is a negatively charged body and if there are less of or lack of electron that you can say positive charge एथरो पिलाने जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा काउंसिल ले पचारे बारंबार भी पचारा होची सेटा होची कोन ना चार्ज रो प्रॉपर्टीज बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जोटा कि 2 मार्क रो क्वेश्चन आसे जेते वर्ष 2 मार्क का क्वेश्चन अधिक आसे बोली कह जाउची तो 2 मार्क के ऊपर बेसी टे फोकस करो तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत इंपोर्टेंट 2 मार्क रो क्वेश्चन फर्स्ट जोटा 2 मार्क का क्वेश्चन आसे सेटा ना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज What कहूची I will tell everything you have to write that thing and you have to note that thing तमन से जिंस को नोट करके रखिया को पड़िबो तो फर्स्ट थिंग इज 2 मार्क का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज बहुत समय भी पचरा जाईती प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्लास रे भी पढ़ा जाईतिला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे तमन केते लिखिबो दरकार 2 मार्क रछि तो 2 मार्क माने मिनिमम 4 टा पॉइंट रहितर अछि जदि मेंशन कर देछि इफ इट इज मेंशनिंग जस्ट राइट डाउन 4 properties then you have to write 4 properties जदि तुमको मेंशन किछि करा जायनी then also you have to write 4 properties काना 2 मार्क रछि तो 2 मार्क बाय मिनिमम 4 टा पॉइंट लिखिबो तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे कोन अछि बहुत पिला क्लास रे कोन करछ खाली लिखतो गोटे प्रॉपर्टी अछि एडिटिव प्रॉपर्टी खाली एडिटिव प्रॉपर्टी लिखले मध्ये मार्क देजन बहुत पिला मध्ये एग्जाम रे जो हमरो प्री बोर्ड करे जायतिला से बोर्ड एग्जाम रे मध्ये प्री बोर्ड एग्जाम मध्ये से भूल करिछ कोन करछ ना खाली प्रॉपर्टीज रे किला लिखिछ क्वांटाइजेशन तापर हमर अछि एडिटिव प्रॉपर्टी जहां भी प्रॉपर्टीज अछि खाली से प्रॉपर्टी उडा लिखि देइछ किंतु ता विषय रे किछु लिखना एटलीस्ट मिनिमम यू हैव टू राइट 1 पॉइंट गोटे पॉइंट निहाती रूपे किछि ना किछि लिखिया दरकार तो सपोज तुम कहला प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज तो फर्स्ट पॉइंट रखियो कोन तो माने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज रे फर्स्ट हला तमरो कोन मन पकाओ इंटरेक्शन ऑफ चार्ज रो इंटरेक्शन पॉइंट अन्य चार्ज सहित केमिति से इंटरैक्ट करूची तो चारटा पॉइंट लिखिबो पांचटा लिखो कि 6 नहीं गोटे शॉर्ट रे कह दोची इंटरेक्शन ऑफ चार्ज
इंटरैक्शन ऑफ चार्ज माने चार्ज टा केमिति इंटरैक्ट करछि विथ अदर बॉडी तो जदि दीटा सिमिलर चार्ज अछि तमे जानछो टू इक्वल चार्जेस कोन करंती से माने रिपेल करंती टू ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर तो जदि हम लाइक चार्ज नबा लाइक माने दीटा को समान दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव if the two positive charges they repel each other then परस्पर कोन करंती रिपेल करंती बा विकर्षण करंती then unlike charges kon karanti they attract each other that means if it is positively charged and it is negatively charged they will attract each other so you can say like charges what for repel each other a line ta likhibo repel each other and unlike charges attract each other e one first likhibo तापर तमरा आसीबो सेकंड जोटा अछि additive property so additive property कोन so additive property माने कोन जदि गोटे सिस्टम अछि if there is a system and there are more than one charge जदि एक रु अधिक चार्ज अछि then the net charge of the system is equal to the sum of individual charges मनकता जदि गोटे बहुत गुडा सिस्टम अछि ए सिस्टम तो कोन गला the find the net charge of the system then this is the sum of the individual charges suppose it is 1 coulomb minus 2 coulomb 3 coulomb 5 coulomb minus suppose 4 coulomb then the net charge of the system so the कहला net charge kete system ro then the net charge of the system is equals to the sum of the individual charges that is 1 minus 2 it is minus 4 it is 3 5 so 1 5 plus 3 8 plus 1 9 coulomb minus kete karibo 6 coulomb to hobo 3 coulomb the net charge kete 3 coulomb of the system is 3 coulomb so like that you have to understand also basing on this one you will also get some numericals yakune ki madhya numericals pachara jay from where when you will study Coulomb's law there you will find numericals yakune ki numericals pachara thyo mane dita body thiba taku touch kara hela first you touch the two bodies and then you separated the two bodies तापरे केते फोर्स अछि कैलकुलेशन करियो सेडा तो एडिटिव प्रॉपर्टी जानलो तापरे नेक्स्ट अछि क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी बहुत इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी लानी क्वांटाइजेशन आको नेट मध्य न्यूमेरिकल आसे क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी तो क्वांटाइजेशन कोन क्वांटाइज्ड मींस the net charge of a system or net charge equals to an integral multiple of a basic charge के electron that is the net charge equals to n into e n होछि कोन प्लानिटी n is an integer means 1 2 3 whole number it's not a fraction केबे हले हाफ e ही परिबो नै never it will be half e एटा भूल आधा इलेक्ट्रॉन केबे रह परिबो नै you can't write half e means जोटा को कहछ आधा किबा 3/2 किबा 4/3 fraction you can't write the fraction from of electron so net charge of a system gote body re total charge kete hobo half of a basic quantum charge that is electron it is important तापर next को हम जिबा next एटा बहुत important property प्लान आको नै क्वेश्चन आसे कोन क्वेश्चन आसे whatever the what questions they are asking they will ask find the number of electrons n बाहर करो एटा करंट इलेक्ट्रिसिटी तुम पढ़ाई थो सपोज करंट फ्लो होची 2 एंपियर रो बहुत थोड़ा भी पचरे जाय सिंपल क्वेश्चंस देयर मे बी आस्क कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एंपियर फ्लो होची फॉर 5 सेकंड किबा 5 मिनट if 2 ampere current flows for 5 minutes then calculate the number of electrons flowing through the conductor केतेटा इलेक्ट्रॉन जाउची बाहर करो so very first thing you have to find the charge q after getting the value of charge q you have to just divide it that is I equals to what is the formula q by t simple question पिलाने डाके आसेडा तो ध्यान सहित करथो इस दिन सब ध्यान न देले कोन होय ना परीक्षा रे मिस कर जिवो you will miss the questions so I equals to q by t you have to find the number of electrons n so I is given to you have to find what time they have given 5 minutes so find q jagah what you can write instead of q that is n into e
n into e time 5 minutes. You have to convert into seconds. Remember that one. You have to convert minute into second. Then only you can write. So you will get the value of n. You know you availability कौन question आसे जोटा कि बारंबार पचरा होची. Calculate the number of charge in 1 coulomb. 1 coulomb रे केतेटा इलेक्ट्रॉन अछि बाहर करो. Find the number of electrons in 1 coulomb. 1 coulomb रे केते अछि बाहर करो. किंबा you can say also very important पिलाने important गोटे question. 1 coulomb is the largest unit of charge. Is the largest unit of charge. Largest unit of charge. केमे देखा हला explain करो. 2 मार्क रो क्वेश्चन में आसी पारे. Explain how 1 coulomb is the largest unit of charge. Also the same type of question will ask in where capacitor. 1 farad is the largest unit of capacitance. That also is important question. So just explain how 1 coulomb is the largest unit of charge. It is based on the quantization of charge, that property. That you know q equals to 1 coulomb. That is equals to n into e. So n equals to how much? 1 by e. That is 1 by 1.6 into 10 to the power how much? Minus 19. If we calculate, it is nearly equals to I think 6 into 10 to the power 18 or something. It will come. So remember, n equals to, it will come like that, 10 to the power 18 like something it will come. So remember, 10 to the power 18 is a huge number. 10 to the power 18 is a huge or largest. Remember, there are 18 0 in 10. That is, it's a very huge number. So that's why 1 coulomb is the largest unit of charge. To get 1 coulomb, you have to find this much of electron. After getting this much of electron, that is equals to how much? 1 coulomb. It will be 6 point something. It will be also 5 point something. You just calculate the exact value. That much of electron will give you 1 coulomb of charge. That's why 1 coulomb is the largest unit of charge. I hope all are going good only. So next one is, you can write next property. There are 1 2 3 quantization, additive, then one more interaction, then one more another property is there. Conservation of charge. Conservation of charge. Conservation of charge. Conservation means constant. The total charge of a system remains always constant. It is neither created nor destroyed. Just like energy. Energy is conserved means the total energy of the system is conserved, constant. Therefore, the charge is conserved. Charge is conserved means the total charge of a system is constant. But what system ro total charge ta kon hobo? Constant rahibo. It is first property. First number out important property, invariance of charge. Invariance of charge. Invariance property hote. Invariance property means what? That the amount of charge remains constant whether it is at rest or it is moving with a velocity v. That means the charge of electron is always constant. That is electron no charge kete 1.6 into 10 to the power minus 19. This charge is always constant whether it is at rest or it is in motion. Charge टा स्थिर अवस्था रे थाओ किंबा गतिशील अवस्था रे थाओ, it does not depend on that one. The charge of the electron is always 1.6 into 10 to the power minus 19. This is one of the most important property. Another that charge, what is the mass of electron? That is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So what it means? If the electron is moving, then the mass does not remain constant. Remember that one. Mass of the electron is not constant. It varies with the velocity. Velocity जदि माने
गति बढ़िले मास टा बढ़े एटा आइंस्टाइन को रिलेटिविटी थ्योरी अनुसार तमाने पढिबो मास और चार्ज भीतर बेले क्वेश्चन आसे डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज आल्सो समटाइम दे विल आस्क द क्वेश्चन ना मास ता सदा गोटे बॉडी रो कोन होय चेंज होथे वेरिएबल क्वांटिटी बट it is not what the charge is not variable, it's always constant. Remember that is the difference between charge and mass, most important. So invariance means q at rest charge star value jaha rest re jaha aw motion re sia saman hoye magnitude is always remain constant. These are the basic properties of charge. Then after that there are some questions like that, how will charge a body, that never asked in examination केबेले परीक्षा रे पचरबेनी केमती चार्ज करा जाय डिफरेंस मेथड अछि कोन सब अछि त माने जानथियो फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन एटा सब अछि कंडक्शन गोटे अछि इंडक्शन गोटे अछि फ्रिक्शन अछि फ्रिक्शन मींस घर्षण द्वारा इफ यू विल rub the two bodies then you will get also charge सेठी चार्ज हुए काहे चार्ज हुए because of the transfer of electron from one body to other body. These are the basic thing समस्ते मन रख बेसिक गोटे बॉडी को हम देखिथिबो छोट बेले तमे पेन नै के एंदी करि करथिबो देखिथिबो पेन करिया द्वारा से पेन टा भी चार्ज हो जाए ताको पेपर को से अट्रैक्ट करे why it is attracting because there is a motion of electron between the two bodies between the pen and the silk or you can say the air also. तो इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन टा कोठी की जाए इलेक्ट्रॉन टा पिला नेटा गोटे इंपोर्टेंट मन रखता इलेक्ट्रिटा बॉडी अछि दीटा बॉडी को तमे घर्षण करिया द्वारा कोठी की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो ना जहार वर्क फंक्शन एटा सपोज W1 दिस इज W2 सो एटा हला W1 मींस एटा सपोज एटा W1 इज लेस देन W2 वर्क फंक्शन माने कोन पिला ने minimum amount of energy जति देले इलेक्ट्रॉन टा बाहर के आस्थिबो that is you can say also work function. So when you rub these two one on when you do friction between these two bodies then the electron will transform from this body to that body A to body B because the work function of this body is less than the work function of body B. मन रखिथा आ पिला मन रखिथा जते इलेक्ट्रॉन टा ट्रांसफर हुए the mass also decreases यार mass टा कमी जाए यार mass टा बढ़ी जाए these are the basic agents छोड़ा सुनी की मन रखिथा तमे भाबनी जे these are unnecessary things I am talking to you these are the very important questions sometimes these are the basic questions wherever you are going to attend anything on any interview they are going to ask these type of questions or in viva also they will ask sometimes. So whether the mass increases or the mass remains constant or decreases when the electron transfer from one body to another body then the mass also decreases mass काहे decrease हुए कारण mass भी तार किसी इलेक्ट्रॉन जाउची तो इलेक्ट्रॉन टा बिजबा द्वारा किसी mass मध्ये ट्रांसफर होला so the mass decreases so mass of this body will be less than the mass of this body or you can say the negative body have lesser mass the positive body sorry उल्टा कर देबे the positive this is negative body electron टा जदि एठु को गला एफिटिक ट्रांसफर होला then what will happen this will become positively charged and this will be negatively charged एटा negatively charge हे जो एटा positively charge हे जो जहा पर कोन हो यार मास अधिक हे जो यार मास कम हे जो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन ताउटे इंडक्शन लिबो और कंडक्शन अछि सब पूरा डिटेल्स रे हम कोइ गोटे करिबा तापर न्यूमेरिकल्स करिबा न्यूमेरिकल्स प्लान बहुत इंपोर्टेंट कहथिल स्टार्टिंग रो मो पीडीएफ फाइल रखिछि ग्रुप रे भी शेयर कर देबी टेलीग्राम ग्रुप रे जो माने टेलीग्राम रो ऑप्शन जॉइन कर परिबो दे कैन आल्सो सॉल्व द क्वेश्चंस एंड वन मोर थिंग जहा डाउट्स रोची तले हमर स्कूल हे आसुची नंबर टा देखुथिबो सेठी यू कैन आस्क मी दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर आल्सो एंड लाइव चैट रे मधम चैट ऑफ हे जेछि इफ यू वांट टू आल्सो हैविंग एनी डाउट्स यू कैन शेयर मी इन व्हाट्सएप आल्सो. So what will happen this is positively charged and this is negatively charged then one more thing that is method of induction कोन हमर जे कोन Coulomb's law पढाइनी से कोन बेसिकली न्यूमेरिकल्स आसबनी किछि न्यूमेरिकल्स अछि on the basis of quantization of charge we'll solve but first we'll know the basic theories what are the possible theory questions
देन इंडक्शन रे कोन एटा पचारे होइनी केबे पिलाने खाली जस्ट जानि था इंडक्शन कोन आ गोटे चार्ज बॉडी को आ गोटे एठा 49 बॉडी पाखे रखिबो जस्ट आ नियर बाय रखा एटा पॉजिटिवली चार्ज अछि तो इफ यू कीप द टू बॉडीज besides them or nearby to each other then what will happen this positive charge will attract the negative charge of this body तो ये पॉजिटिव चार्ज कोन करबो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करबो जहा पर कोन होबे कि नेगेटिव चार्ज आसीबो तो एठी कोन हियो पॉजिटिव चार्ज आसीबो तो पॉजिटिव चार्ज आसीबो द्वारा कोन हबो एठी नेगेटिव एटा सुनो एटा पॉजिटिव अछि नेगेटिव को अट्रैक्ट कला तो एपडु नेगेटिव चार्ज आसला से एपडु पॉजिटिव चार्ज पड़ेला एटा न्यूट्रल थिला वर्तमान कोन करो जस्ट कनेक्ट इट विथ द ग्राउंड सहित कनेक्ट करो तो ग्राउंड सहित कनेक्ट कले इलेक्ट्रॉन उडा ट्रांसफर होबो उपरको और यू कैन से पॉजिटिव चार्ज उडा डाउनवर्ड मोशन करिवो जहां पर ये पॉजिटिव चार्ज उडा धीरे धीरे डिक्रीज हे आसबो एडा को पाखे रखिथिबो you have to keep this body near to this one it will attract the negative charge towards this and the positive charge will move away from this body to the other side and if you are connecting it to the ground then the positive charge will flow towards the ground तो ground को आसीबो तेठी रहिबो केवल देखो फाइनली एटा सब पॉजिटिव चार्ज तळक आसला कि you can see the electron are moving towards the body तो फाइनली कोन हो एटा केवल नेगेटिव चार्ज है खाली नेगेटिव चार्ज आसीबो तो न्यूट्रल थिला फर्स्ट इट वाज न्यूट्रल नाउ इट बिकेम नेगेटिवली चार्ज लाइक दैट you can charge a body by method of induction remember आउट मेथड अछि मेथड ऑफ कंडक्शन तो मेथड ऑफ कंडक्शन ने कोन होइला ने मेथड ऑफ कंडक्शन ने कोन है दीटा को टच कर दियो डायरेक्ट टच करबो डायरेक्ट माने ओटे पॉजिटिव चार्ज बॉडी अछि ता सहित आउट बॉडी को नेकी जस्ट डायरेक्टली टच कर दियो दीटा को जस्ट कनेक्ट कर दियो कनेक्ट कर देले कोन हो पॉजिटिव चार्ज ता को ट्रांसफर कर दियो तो ए बॉडी ता भी चार्ज होला एटी डिफरेंस ता बुझो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड कंडक्शन इंडक्शन और कंडक्शन में कौन डिफरेंस अछि हु कैन से केस कोइ करियो कंडक्ट इंडक्शन और कंडक्शन में कौन डिफरेंस अछि एठी भी चार्ज होचे एठी भी चार्ज होचे the only difference is that here you will get oppositely charged body but here you will get the similar charge if this is positively charged and the neutral body is also positively charged then you will if you are connecting the two bodies then you will get also positively charged therefore you will get the similar charges here but here you will get opposite charges positive थिला नेगेटिव आसे तो सेति पय तमे को प्रोसेस टा अप्लाई करछो यू हैव टू डू दैट वन तापर नेक्स्ट इंपोर्टेंट होची कूलम्स लॉ वेरी इंपोर्टेंट बिलाने तार जो थरो क्वेश्चन आसे मैक्सिमम क्वेश्चन हमें सेटा करिया कूलम्स लॉ टा बहुत इंपोर्टेंट Coulomb's law तो Coulomb's law कोन हम देखिबा Coulomb's law रे तमन जानिथिबो यदि दीटा चार्ज अछि if this is a q1 charge and this is a q2 charge and the distance between them is suppose r then ताको भितरे केते फोर्स रहइबो force equals to कोन force is proportional to product of the charges बहुत simple law product of the charges and the separation between them inversely proportional to the square of the separation between the two charges बहुत इंपोर्टेंट लॉ उटे पास लॉ जोटा अछि याको ने कि बहुत न्यूमेरिकल से आसे हम से न्यूमेरिकल को सॉल्व करिया तो माने कूलम्स लॉ स्टेटमेंट भी मन रखि परिबो the force is directly proportional to product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them dita भितर केते डिस्टेंस अछि तार स्क्वायर परे inversely proportional then a proportional उठे और कांस्टेंट ले जाए k हला q1 q2 by r square बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखिबो बे एक क्वेश्चन k को लेके थोड़ा क्वेश्चन आस्तला 2019 ना कोडी आई थिंक इन 2020 they asked the value of k रो वैल्यू केते k इक्वल्स टू केते प्लान मन रखो k equals to 1 by 4 pi epsilon 0 जहां वैल्यू ला 9 into 10 to the power 9 एटा मन रखियो 1 by 4 pi epsilon 0 रो वैल्यू तो एटा होची तमरो बेसिक जिंस एटा को समझते मन रखिबो कूलम्स लॉ अगला क्वेश्चन कोन आसे 90 देखो k q1 q2 by r square अछि तो एठी तुमको पचारियो चार्ज रो वैल्यू बढ़े देला क्वेश्चन करबा जानिबा तो मेन होची थियर यूनिट डायमेंशन k रो यूनिट डायमेंशन को मन रखिबो आउ जो लिखली k रो k कॉस्ट कोन करली 1 by 4 pi epsilon 0
तो जो एप्सिलॉन 0 अछि एप्सिलॉन रो यूनिट एंड डायमेंशन बहुत इंपोर्टेंट यूनिट एंड डायमेंशन बाहर करियो unit dimension बाहर करियो also you have to find the dimension of k और epsilon दिटा को they are not equal epsilon और k दिटा को equal no epsilon नॉट टा कोन this is the permittivity of free space epsilon नॉट तो बर्तमान हम कोन करबा यूनिट डायमेंशन बाहर करबा तो एटी देखो एटी force केते थिला force to k q1 q2 by r square थिला तो k जगह लिख परबो 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square so k q1 epsilon naught ର value दरकार so epsilon naught ର यूनिट दरकार तो epsilon naught के कोड बने आसो epsilon naught पळे आसला हो q1 q2 by 4 pi f r square so q1 और q2 हला चार्ज रो फर्स्ट देखिबा डायमेंशन चार्ज हला a into t चार्ज रो डायमेंशन हला I equals to कोन रे q by t तो q equals to it ए फॉर्मूला जानि थिबो एम्पियर into टाइम सो a into t यार भी वैल्यू आसीबो a into t divided by f रो तमे जानछो m1 L1 बहुत इंपोर्टेंट पिलाने डायमेंशन टा m1 L1 t - 2 into L square तापरे नीचे देखिनबो a square हे जिवो t to the power 4 हे जिवो तापरे m to the power -1 हे जिवो l to the power -4 आसीबो नीचे कर m टा ऊपर पळाइबो m -1 हे जिवो L1 L2 अछि L3 हे जिवो तापरे a अछि a square हे जिवो t ର power 2 ଅଛି t to the power 4 ହେଇଯିବ ଲେଖି ଦଉଛି m - 1 l3 ତାପରେ ହେଇଯିବ t to the power 4 a square बहुत इंपोर्टेंट डायमेंशन टा वेरी इंपोर्टेंट स्टार मार्क कर मन रखो यूनिट डायमेंशन में क्वेश्चन आसेरा कंपलसरी होटे त एटा तारो डायमेंशन तो यूनिट कोन हबो कूलम एटा जो कूलम स्क्वायर 4 है न्यूटन सो न्यूटन ऊपर पळेबो मीटर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स तो दिस इज द यूनिट ऑफ epsilon naught इटा मन रखो एटा परीक्षा जो पचरे थिला 20 जो 2020 रे पचथिला क्वेश्चन टा तार पचरे माने हला जे तमाने यूनिट टा जानिछो ना नाही हेलुटा तो समस्त जानि थिबे मेन हला यूनिट टा जदि लेखिनो ताले भूल मार्क भी दिया जिवो सो यू जस्ट हाउ टू राइट द यूनिट आल्सो विथ द वैल्यू तो एटा तो मन सरला बर्तमान याकु ने कि किछि क्वेश्चंस अछि तो हम किछि क्वेश्चंस करिया पय ट्राई करबा सो वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस वन आउट प्लान मन रखता जदि दीटा के भीतर मीडियम को चेंज कराला इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज चेंज सपोज दिस इज q1 एंड दिस इज q2 दीटा के भीतर एयर अछि ठीक अछि सपोज ये दीटा का चार्ज को लेके वाटर रखिलो इफ यू आर कीपिंग द टू चार्जेस इन water then what will happen तो जे हमें तक नहीं कि वाटर रखियो ताले कोन हबो वाटर रखले कोन हबो तार वैल्यू समान रहिबो कि अलगा हबो जो फोर्स थिला whatever may be the force there in air whether the force remains constant or if it changes then what is its value ताले तमरो वैल्यू केते आसे बहुत इंपोर्टेंट प्लान नक्शा आउट रिलेशन f air रो फॉर्मूला ना कोन कहली 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square बनको f मीडियम रो कोन फॉर्मूला हबो गोटे मीडियम रो रखिलो जे कोन से गोटे मीडियम रो रखिलो whether may be water or may be oil or may be glass or anything any material between the dita ko charge भितर गोटे material को आनि रखिलो then what will be the force वर्तमान फोर्स ता केते हबो जहा थिला फोर्स जहा थिला से रहबोनी अलगा हबो तो कोन हबो से फोर्स ता सो 1 by किनार मनतो 4 pi epsilon 0 into epsilon मन केता epsilon r रो फॉर्मूला ला कोन epsilon by epsilon naught epsilon r equals to epsilon medium by epsilon naught याको कहे जे रिलेटिव परमिटिविटी बहुत जे इंपोर्टेंट जिंस रिलेटिव परमिटिविटी याको बेले बेले के भी लिखा जाए
ए के आउ आर जो के दिटा अलग जिंस पिला माने कंफ्यूज हो जांती ए के जहां लिखंती आउ ए जो 1/4π0 जहां ए के से नो दिटा अलग जिंस माइंड रखिता ताकि मधे कोहा जाय के एटा हला डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी तो रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट एयर मीडियम जो अछि तो दीटा को जदि हम डिवाइड कला हम जानि परिबो दीटा डिवाइड कले एप्सिलॉन मीडियम हम एटा को मल्टीप्लाई हि जिवो तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन इनटू आर ए दीटा का आसी ए दो दीटा का आसला एप्सिलॉन नॉट एठी एयर थिला ओली एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट लिखुतिलो बतन यू हैव रिप्लेस्ड इट विथ अनदर मीडियम सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इज एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर k q1 q2 by r square बतन दीटा का रेशियो ने जाओ इट विल टेक द रेशियो f air by f medium तो कोन हो दीटा के जे हम रेशियो नबा q1 q2 r square कैंसिल हो जिवो एटा कैंसिल हो जिवो तो एप्सिलॉन नॉट ता r को प्रूफ होलेगो और तक बचे k सो तमरो जो आसीबो ठीक अछि ना उल्टा के लगे रे नहीं ठीक अछि सो f medium केते होबो पिला मन रखता मीडियम रे फोर्स केते होबो f air by k ए फार्मूला को मोडे बारंबार ए फार्मूला को लिखि के रखिबो एटा बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला क्वेश्चन আছে क्वेश्चन कोन आसला सिंपल क्वेश्चन बहुत सहज क्वेश्चन जोटा डिफिकल्ट लागे सपोज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 5 न्यूटन or maybe 50 newton the force between two charges is 50 newton now the two charges are placed inside a medium of dielectric constant suppose dielectric constant k दिया गला suppose दिया गला suppose maybe 5 रे रखला dielectric constant किछि यूनिट न थाए dielectric constant k रो यूनिट न थाए दुटा कैंसिल हो जाए तो यूनिट लेस आसे तो dielectric constant 5 रे रखा गला then what is the force in that medium question टा देखिले जानि परिबो the force between two charges is 50 newton the force between two charges is 50 newton dita charge भितर force हला 50 newton now the charge is placed inside a medium the charge is placed inside a medium of dielectric constant k equals to 5 dielectric constant k equals to 5 then calculate the force between the charges बतन कैलकुलेशन कर calculate the force between two charges question टा लिखो the force between two charges is 50 newton now the charges are placed in a medium of dielectric constant 5 दीटा चार्ज अछि एयर अछि ताको भीतर फोर्स हला केते 50 न्यूटन बतन सेटा को नै गोटे मीडियम रे रखा गला जो मीडियम रे की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट केते अछि 5 अछि देन कैलकुलेट द फोर्स इन दैट मीडियम से मीडियम रे बतन केते फोर्स अछि बाहर करो बहुत सहज जे जानिथिबो आराम से लिख परिबो f air by k तो f air जे है 50 k हला 5 तो डायरेक्ट पके दो 50/5 का आंसर आसीबो 10 न्यूटन बहुत सो एटा जो बेसिक एटा किछि भी वैल्यू चेंज करि देता है एंते देखिबो दीटा अछि सपोज चार्ज अछि नाउ यू आर कीपिंग द चार्जेस इन ए वाटर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 वाटर और डाइलेक्ट्रिक 80 थे देन नाउ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस बतन फोर्स केते हबो कैलकुलेशन करो बहुत सहज अछि कर परिबो तापर तमरा आसीबो फोर्स पारे या देले क्वेश्चन बहुत अछि हम गोटो करी सॉल्व करबा तापर जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड रो डेफिनेशन भी जानि थाओ इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला हला E = F/Q फोर्स पर यूनिट चार्ज अकमत टेस्ट चार्ज कहती इलेक्ट्रिक फील्ड माने द स्पेस अराउंड ए चार्ज where a test charge जोठी के ओटे टेस्ट चार्ज कोन करबो will experience force of attraction or repulsion गोटे चार्ज रो सराउंडिंग रे जोठी ना आ गोटे चार्ज रखले कोन हबो से मे बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन आस्थिबो दैट रीजन इज नोन एज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड एटा गोटे चार्ज अछि q तो यार चारि गोटे रीजन जो रीजन रे कोन ना आ गोटे चार्ज को रखले टेस्ट चार्ज को रखले मे बी
रिपल्शन नहीं पारे मे बी अट्रैक्शन नहीं पारे एटा नेगेटिव चार्ज थिले अट्रैक्शन होबो पॉजिटिव चार्ज थिले रिपल्शन आसो दैट इज नोन एज व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड किंतु तार मैथमेटिकल डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट चार्ज तार यूनिट डायमेंशन बहुत इंपोर्टेंट माने वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कहले चलो इलेक्ट्रिक फील्ड रो यूनिट डायमेंशन जोटा कि बारंबार पचारुछि बहुत थरे नोटा मिनिमम 10 थर हम पचार इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आउट जिंस अछि यार सदाले यूनिट और डायमेंशन पचारिबो तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायमेंशन आउ यूनिट सदा मन रखिबो इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायमेंशन एटा न्यूटन पर कूलम्ब एटा यूनिट हबो न्यूटन पर कूलम्ब आउटे कोन हला तार डायमेंशन m1 l1 t-2 by 2 हला a into t कैलकुलेशन करनबो m1 l1 t to the power -3 a -1 एटा हला तार डायमेंशन तीन से इलेक्ट्रिक फील्ड अछि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो प्रॉपर्टीज तापर हमें डाइपोल विषय रे पढिबा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रो प्रॉपर्टीज त माने जानछो तो सब जा प्रॉपर्टी सेटा का नेक्स्ट क्लास रे डिस्कशन करिबा ता पूर्व इलेक्ट्रिक फील्ड रो मन रखिथाओ आउ कोन अछि डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल विषय जानिबो इलेक्ट्रिक डाइपोल काली हम करबा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो पोटेंशियल सहित एक रिलेशन अछि मन रखिथाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोन पोटेंशियल सेकंड चैप्टर सेटा हम सेकंड चैप्टर रे पढिबा बर्तमान हम कुछ क्वेश्चन अछि मो पाखरे अछि हम देखुजी से सब अछि ना नाही जदी थिबो तो भलो कथा हमें करबा हबोदी किसी क्वेश्चन से हमें ट्राई करबा क्वेश्चन देखो किछि आसी क्वेश्चन जदी आसी सेडा को ट्राई करो करिया पाई किछि क्वेश्चंस अछि क्वेश्चंस को ट्राई करो करिया पाई देखो किछि क्वेश्चंस लिखा है तो स्क्रीन में आस्ते बोधे स्क्रीन में हम देखो जी आसला ना नहीं तो देखो गोटे अछि एडा तमरो तो ऑलरेडी सब पढा जाईछि फिर भी तार रिलेटेड किछि क्वेश्चंस अछि क्वेश्चन टा देखो फर्स्ट क्वेश्चन टा a hollow को लिखा है hollow conducting sphere of charge 10 microcoulomb what will be the electric field at the center of the sphere of 2 meter एटा तो सिलेबस नाही बट फिर भी तमान जानथा जेतो हमरो खाली सिलेबस ओरिएंटेड होनी हम मध्ये एंट्रेंस ओरिएंटेड भी क्वेश्चन करेगा तो तमरे एटी क्वेश्चन दे अछि hollow sphere जहार रेडियस जहार चार्ज अछि ओटा hollow sphere अछि कंडक्टिंग स्फीयर अछि जहार केते दे अछि रेडियस केते दे अछि 2 मीटर दे अछि रेडियस 2 मीटर दे अछि सेंटर रे केते आसे समस्त करटा 2 मिनिट पई भले जानि परिबो तमे जानथो मन पका इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर of a sphere is kete 0 center re kete thae 0 thae electric field at the center of a hollow sphere is 0 ya inside sadale 0 thae surface rate kq by r square किंतु सेंटर रे जे कोन से रहले 0 हबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन टा कोन अछि हम प्रत्येक दिन 5 टी कि 6 टी प्राखा 10 टा खंड एमसीक्यू पढिबा ता सहित सब्जेक्ट गुडा को जो भले डिस्कशन करा अछि सेटा करा जिवो ता रिलेटेड क्वेश्चंस मु काली करबी आज जहा पढिलो कूलम्ब्स लॉ को नै कि कूलम्ब्स लॉ रो जहा भी एप्लीकेशन अछि आउ ताकू नै कि केमती क्वेश्चन सॉल्व करिवो परीक्षा रे को टाइप रो क्वेश्चंस आछे सेटा को मु काली करबी किंतु हमें प्रत्येक दिन चैप्टर रो निहात रूपे मिनिमम 10 टा खंडे एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया निहात रूपे सिंपल क्वेश्चन जोडा को परीक्षा रे आसे जेंते बतन तो स्क्रीन अछि एबे 5 कि 7 टा क्वेश्चन से चैप्टर रो करबा मे बी आउटसाइड दैट कंटेंट ही पारे बट हमने डेली प्रैक्टिस सेकंड क्वेश्चन देखो व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड a if a point charge q is at the center of sorry one of this corner रे अछि क्यूब रो गोटे कॉर्नर रे गोटे रखा है इलेक्ट्रिक चार्ज को माने पका एटा गोटे इलेक्ट्रिक चार्ज अछि इलेक्ट्रिक क्यूब अछि क्यूब रो कॉर्नर रे गोटे रखा है कोन चार्ज रखा है क्यूब देन केते फ्लक्स लेके होते चारटा का ऑप्शन अछि कोटा हबो करेक्ट हबो गोटे समय देगला समस्त करो व्हाट इज द
Q at the center of the corner. Corner रे केते आसी देखो, corner रे केते आसी देखो समझते टिके साइड को दूची हां corner रे केते आसी क्यूब रो आसुनी बोध माने पडु आसी हां क्यूब रो corner रे केते आसीबो क्यूब रो corner रे जदि चार्ज को रखा है क्यूब रो corner रे ताहले क्यूब कॉस केते 8 एप्सिलॉन 0 काना ए कॉर्नर सहित केतेटा क्यूब लागि परिबो 8टा क्यूब लागि परिबो 8टा क्यूब आसले ही जाय कि कंप्लीट होबा क्लोज सरफेस होबा आ गोटे क्लोज सरफेस पई अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ q by epsilon 0 केते ये हुए q by epsilon 0 फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एठी जेंतो 8टा क्यूब लागि परिबो त q by 8 epsilon 0 होबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि ए पार्टिकल ऑफ मास q mass m and charge q is released from rest in a unit electric field. The kinetic energy attained by the particle after moving a distance x. Kinetic energy केते हो? Kinetic energy केते हो बाहर करो. Kinetic energy रो फार्मूला. Kinetic energy रो फार्मूला ना half mv square मन रखो. और change in kinetic energy का का से समान हो जाए एटा वर्क डन से समान हो एती जिंस को मन रखो. Work done equals to kinetic energy equals to half mv square. तो work done नो फार्मूला ला q into v. याकू ने सदा रो क्वेश्चन आसे प्राय समय रे देखिबो मैक्सिमम समय रे त माने यार ऊपर क्वेश्चन पाइबो काहाकू ना ए एनर्जी को नै गोटे चार्ज के मोशन करछि ता जो केते आसुछि मो नेक्स्ट क्लास रे ट्राई करबी एटा को माने खाली क्वेश्चन ता रहइबो केमती सेटा मो ट्राई कर नेक्स्ट क्लास रे आज पे क्लास रे एडजस्ट करने था काइनेटिक स्पेस उडा बहुत पढौछि बोर्ड रो नेक्स्ट क्लास रा माने केवल क्वेश्चन ता जो रहइबो सेमते हमें ट्राई करबो ठीक अछि तो w equals to half mv square तो q into v or you can say force into displacement also work done formula hla force into displacement also work done formula force into displacement the force ro formula hla q into e the force equals to q into e the force equals to q into e the force जाके लिखो qe distance दे है x तो formula हो qe x तो आंसर हो qe x force into displacement equals to work done equals to kinetic energy work done टा kinetic energy सहित समान बेरो एठी पोटेंशियल भी देथिबो किबा यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल तो कोन जानछो पोटेंशियल लिखले कोन लिखिबो E equals to v by d so v equals to E into d कर दो E into x कले भी से समान आसीबो v जगह रे E into x पकले भी से qe x आसीबो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन अछि a point charge q and minus 2q are placed at a distance apart if the electric field at the location of q is E then the electric field at the location of 2q एटा गोटे क्वेश्चन अछि समस्त करिया पय चेष्टा करो और ऑप्शन डा सुनथे ऑप्शन डा हम देखे दोछि ऑप्शन डा देखिबा कोन अछि सो ऑप्शन डा सम बटन आसी जाइथिबो ऑप्शन डा देखो समस्ते कोडा हबो को कोन दे हेछि हमरो दीटा चार्ज अछि q1 2q दीटा चार्ज अछि q1 2q एडाला -q एडाला -2q तो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड E अछि -E अछि एठी इलेक्ट्रिक फील्ड कोन दे जाइछि E दे देछि ना तो नेक्स्ट टा केते -2 सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट -2q एठी -2q रे केता इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करो तो यार फार्मूला कोन या जो एठी इलेक्ट्रिक फील्ड आसीओ या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीओ एठी ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रो फार्मूला है kq by r square तो kq ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करछो तो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर करछो कहा जो बाहर करछो ई चार्ज जो बाहर करछो तो ई चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड है kq by r square so k into 2q by r square ए फार्मूला टा सो ना ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड कोन हो k q by r square so k q हला ए चार्ज को एठी इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो ए चार्ज रे बाहर करछो ए पॉइंट रे बाहर करछो मींस you have to find the electric field because of this charge
हियर ए पॉइंट रे केते इलेक्ट्रिक फील्ड अछि ए चार्ज को ड्यू टू दिस चार्ज सो k q by r स्क्वायर एटा तुमको दिया है ई सहित समान अछि वर्तमान कह गला ए पॉइंट रे चार्ज केते बाहर करो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट हियर ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड केते अछि बाहर करो तो एथि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो या जो इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो because of this charge the electric field will be here ए चार्ज जो एथि इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो तो ए पॉइंट रे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आसीबो एटा केते हो देखो एटा हबा मोर k ए चार्ज जो एथि इलेक्ट्रिक फील्ड q by r स्क्वायर सो k q by r स्क्वायर एटा देखो एटा e2e तो एटा हे जो हमर केते जो आधा इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तार आधा इलेक्ट्रिक फील्ड अछि तो को ऑप्शन टा हबो e by 2 कोठी अछि देखो e by 2 लास्ट ऑप्शन टा ठीक हबो e by 2 काई ना एठी देखो आधा हे जिवो एठी k 2q by r स्क्वायर अछि तो k q by r स्क्वायर आधा हे जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड तापर नेक्स्ट क्वेश्चन टा अछि थ्री चार्जेस 4q q and small q are placed in a straight line of length l at a point distance 0 l by 2 and l respectively what should be the q in order to make a force on charge q0 तो ये क्वेश्चन टा हम करिया पूर्व मो क्वेश्चन टा को स्क्रीन नु हटे दे तापर हमें करिवा बुझला तो एटी कोन दिए जाय हमरो तीनटा चार्ज अछि कोन अछि 4q q और स्मॉल q एंक भीतर दूरता दिया है कि l/2 एटा भी l/2 तो कोन कह गला जे e4 या पर फोर्स 0 हो तो ये चार्ज वैल्यू केते हो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज q सो दैट एटी फोर्स टा 0 हो तो एटी फोर्स 0 माने या जो फोर्स बाहर करो या जो फोर्स बाहर करो इक्वल्स टू 0 तो k q1 q2 by r square यदि डाक में दूरता कितने l/2 that is l square plus या जो फोर्स में थे आसीबो सो k q capital Q small q by r square that is l/2 r square equals to 0 तो दीटा को इक्वल करनियो आंसर आछो देखो केते आसी k तो कैंसिल हो जिवो q कॉमन आसीले पळे आसीबो एटा जो l स्क्वायर भी कॉमन आसी पळे आसीबो एटा हबो 4 q स्क्वायर l स्क्वायर कॉमन नै आसी पिलाने और जो छी वेक्टर हबो l स्क्वायर प्लस एटा 4 ऊपर पळेबो 4 k कैपिटल Q स्मॉल q by l स्क्वायर इक्वल्स टू 0 ताले 4 4 कटि गले एटा हबो कैपिटल Q प्लस केते जो minus q this is the condition so that the force will be 0 एटी फोर्स 0 होबे ए कंडीशन में रखिले तापर हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखो पिला ने अछि a long straight charge per unit length lambda passes through an imaginary cube of a then कोन कहै छी the maximum flux through the cube maximum flux केते cube रे maximum flux क्वेश्चन ता समस्त पढो थरे से कहै जोटे क्यूब अछि क्यूब रे तार चार्ज पर यूनिट लेंथ हम गिवन अछि चार्ज पर यूनिट लेंथ केते अछि लैम्डा दे देछि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे देछि कोहे देछि मैक्सिमम केते आसीबो फ्लक्स थ्रू द क्यूब क्यूब दे कि मैक्सिमम फ्लक्स केते आसीबो देखो बहुत भलो क्वेश्चन ता समस्त करो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन मते कह जाय परिबो एटा केते हो आंसर हो को समस्त maximum flux through the cube maximum flux केते through cube दे कि maximum flux केते आसी समस्त क्वेश्चन ता लिखो ओटे क्यूब अछि क्वेश्चन ता फास्ट लिखिनो स्क्रीनशॉट नै जाओ स्क्रीनशॉट देखिनियो मु क्वेश्चन ता को हाइड करछि नेक्स्ट टाइम रो मु ट्राई करबी केमती क्वेश्चन ता तमरो स्क्रीन रे रहबो स्पेस ता टिके हमरो अधिक रहला हमें परिवाटा सहज होबो तो ताला देखिबा दे देछि कोन ना ओटे क्यूब अछि क्यूब दे देछि क्यूब रो कोन देछि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे देछि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दे देछि कोति या देछि मैक्सिमम फ्लक्स केते
तो एटा चार्ज पर यूनिट लेंथ तो मैक्सिमम लेंथ केते रह परियो देखो ए क्यूब भीतर मैक्सिमम लेंथ केते रह परियो सो मैक्सिमम लेंथ केते हो ना ए डायगोनल जाके जति के लेंथ एटा ही मैक्सिमम लेंथ है या भीतर फिट ही रह परियो ए घरटा तुम घर जोटी बसो से घर इमेजिन करनियो से घर रे देखो तमर जो अछि मैक्सिमम ए घर देकी तुमको पचरा गला मैक्सिमम फ्लक्स केते जाउछि बाहर करो तो एटा एक क्यूब टाइप रो तो घर देकी हाउ मच द फ्लक्स विल गो द मैक्सिमम फ्लक्स यू हैव टू कैलकुलेट तो यू हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम फ्लक्स मींस यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम लेंथ दैट कैन बी केप्ट इनसाइड द रूम से जो रूम अछि से रूम रे मैक्सिमम लेंथ केते रखि परिबो काहे ना मैक्सिमम लेंथ रहिले मैक्सिमम चार्ज रहइबो मैक्सिमम चार्ज रहिले मैक्सिमम फ्लक्स जीवो सो मैक्सिमम लेंथ केते रहि परिबो मैक्सिमम लेंथ देखो घर रो गोटे कॉर्नर रो आरो कॉर्नर को जोटा अछि सेटा हबो मैक्सिमम लेंथ गोटे कॉर्नर रो आ गोटे कॉर्नर को तो मैक्सिमम लेंथ जो अछि एटा जो रहइबो एटा क्यूबटा ना तो एटा हते हमर मैक्सिमम लेंथ ए कॉर्नर रो ए कॉर्नर जाके जो रहइबो सो ए लेंथटा दरकार ए लेंथटा जाने पले एटा जानिथिबो एटा होछि ए साइड दे देछि बर्तमान ट्रायंगल ला करनो एटा ला साइड ए हमर एटा होछि ए लेंथटा दरकार ए लेंथटा फिट हि जो करनो एटा मैक्सिमम लेंथ सो ए लेंथटा बाहर करे पले प्रथमे यार ए डिस्टेंस बाहर करो एटा गोटे क्यूब अछि ए क्यूब रो एटा हबो केते रूट ए सो रूट ए दिस इज रूट ए दिस इज रूट ए दिस इज रूट ए दिस इज ए सो दिस विल बी हाउ मच रूट 3a पाइथि पिथागोरस विषय अनुसार कराई छै r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर a सहित समान ए तळडा एमति अछि ना तळ फेसटा ए भले अछि तो ए फेसटा केन हबो एटा a एटा भी a तो एटा रूट 2a हो सो दिस इज रूट a दिस इज रूट a माने तळर ए कोनर तळ कोनटा तमे इमेजिन करो जो घरे बसछ से घर इमेजिन करो गोटे कोनर रो आरो कोनर को तमरो डिस्टेंस दरकार तो ए दूरता तुमको ए दिया हेछि गोटे साइड रो दूरता ए दिया हेछि ए पट साइड रो दूरता ए दिया हेतिबो से कोनर रो ए कोनर रो दूरता तमरो पचरा हेतिबो तळ लेंथ रे केते आसीबो √2a सो √2a काइन तळटा गोटे स्क्वायर रो कोनर हला √2a तो एटा √2a एटा a आउ इदी टाकर कले ना √3a तो मैक्सिमम लेंथ हला √3a तो चार्ज हबो कोन चार्ज रो फॉर्मूला जानिचो लैम्बडा इक्वल्स कोन फॉर्मूला q by l so lambda q equals to lambda length देहछि a so a डाला केते √3 मैक्सिमम लेंथ हला √3 तो मैक्सिमम चार्ज इक्वल्स टू √3 lambda a यदि मैक्सिमम चार्ज बाहर पला देन फ्लक्स इक्वल्स टू √3 lambda a by epsilon 0 तो को ऑप्शन अछि देखिनबा √3 lambda a by epsilon 0 q by epsilon 0 मैक्सिमम लेंथ वर्तमान देखो मैक्सिमम लेंथ कोडा अछि तमरो मैक्सिमम लेंथ रा समस्त देखो सो एटा देखिनो टिके मैक्सिमम कोडा अछि को ऑप्शन रा हबो देखिनो समस्त ऑप्शन कोडा अछि हमरो ऑप्शन आई थिंक बी ऑप्शन बी रे ही अछि सो एटा ही ऑप्शन हबो तो स्क्रीनशॉट नै के रखि था समस्त करनबो क्वेश्चन एटा करनबो ए क्वेश्चन रा करनबो आंसर आसीबो √3 lambda a by epsilon 0 तो आज पे थाओ बहुत समय जो बेसी समय ने असुविधा एरा स्क्रीनशॉट नै के रखि थाओ मोडा को शेयर करनै मदो पीडीएफ फाइल को टेलीग्राम ग्रुप रे तसे तो होय तो काली न होय पारे परदिन क्लास हे पारे माने अल्टरनेटिव डे रे होबो किबा रेगुलर क्लास हो प्रत्येक चैप्टर करिवो आई एम श्योर प्रत्येक चैप्टर होबा पे समय लागिवो बट हमको जेहेतु मे भी तमर एग्जाम है जून हे पारे 15-20 हे पारे से 15-20 पर्यंत हमें क्लास कंटिन्यू करथिबा तो 15-20 माने हम पाखरे पाखापाखि 45 डेज रहइबो तो 45 डेज भीतर आई एम श्योर दैट आई कैन कंप्लीट सब थ्योरी विथ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास रे कोलम्स लॉ रो किछि क्वेश्चंस करबा हम जोडा को इंपोर्टेंट व्हिच आर द इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर एग्जाम एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस दे आर आस्किंग अगेन एंड अगेन we'll discuss that one only हम सेउडा को डिस्कशन करबा अननेसेसरी हम समय अधिक नबा नहीं तो तमने ओरिड होबार नहीं तमरा सिलेबस ठीक टाइम रे सरीबो खाली धैर्य धरि के रहिबार अछि तो थैंक यू ऑल स्टे कनेक्टेड आज माने चैनल को सब्सक्राइब करना निहात रूपे सरल तासे संग मानु को जे समस्त आसी की जॉइन